Hello everyone. So today we will study the difference between the active surveillance and the passive surveillance. So in the case of the active surveillance, the data is actively collected, whereas in the case of the passive surveillance, the data is collected passively or reported passively. Second point is the health staff goes to the patient to gather data, and second, in the passive surveillance, data itself is reported to the health system. Third one in this is the health worker goes houses to house to detect fever cases and collect blood on the slides. And in the case of the passive surveillance, example is that patients are coming to the primary healthcare center or and private practitioner. Fourth one in this is the mostly used when the disease is targeted for elimination or eradication, and in the case of the passive surveillance, it is mostly used when the disease is targeted for control. Fifth is the it includes mainly national vector-borne diseases control program and national uh, leprosy elimination program. You can check this full form on internet. Next, in the case of the passive surveillance, it is mostly include most of the national health programs in India. The active surveillance is more expensive as compared to that of the passive surveillance. The example of the active surveillance in this the diseases like poliomyelitis, leprosy, neonatal tetanus, and passive surveillance, the example of the diseases like diphtheria, hepatitis B. These are the some of the examples. So these are the difference of the active एंड द पैसिव सर्विलेंस. जो एक्टिव सर्विलेंस होता है उसमें जो है जो भी हेल्थ केयर वर्कर जो होता है हेल्थ केयर जो वो लोग क्या करते हैं घर घर जाके उन लोगों के सैंपल्स एंड ऑल लेते हैं. और जो पैसिव सर्विलेंस में होता है पेशेंट जो भी पर्सन है वो जाता है हॉस्पिटल्स प्रैक्टिशनर या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में. और ये जो होता है मोस्टली पैसिव सर्विलेंस जो है मोस्टली कंसर्न होता है कि वो टारगेट करते हैं डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए. और ये जो एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है वो टारगेट करते हैं कि वो डिजीज़ जो भी है एलिमिनेट हो जाए या फिर इरेडिकेट हो जाए. ये इसमें डिफरेंस है. टारगेटेड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्री अप्रूवल क्लिनिकल ट्रायल्स further clinical studies might be called to evaluate the mechanism of action for the adverse reaction. इसमें क्या है पहला जो है फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक. It is conducted to determine whether a particular dosing instruction can put patient at an increased रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट. जो भी हम लोग उनको डोज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी भी पर्सन को, क्या वो इंक्रीज़ कर सकता है उस पेशेंट के एडवर्स इवेंट्स को, ये सब देखा जाता है इसके अंदर. हाँ, जेनेटिक टेस्टिंग इट प्रोवाइड्स द क्लू अबाउट विच ग्रुप ऑफ पेशेंट माइट बी एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन. नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक स्टडीज. इट इज़ बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल properties and expected use of the drug in general practice to investigate potential drug and food interaction might be called for. It includes the population pharmacokinetic studies, drug concentration monitoring in patient and normal volunteers. And fourth one is the additional studies in special population might be useful to determine and to quantify the magnitude of the risk which might be identified from pre-approval clinical trials but cannot be fully quantified in such population. लार्ज सिंप्लीफाइड ट्रायल्स इसमें क्या होता है माइट बी सेटअप टू एक्सप्लेन द बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल ऑफ ए ड्रग आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल सेटिंग एंड टू फुलफिल क्वान्टिफाई द रिस्क ऑफ ए क्रिटिकल बट रिलेटिवली रेयर एडवर्स इवेंट. दिस इज ऑल अबाउट द PV फार्माकोविजिलेंस मेथड्स. थैंक यू.